Good morning, student. Now, this is the class of biology, the chapter microorganism, and the topic that I have to continue, that is cleansing the environment. Now, in the previous class, I have finished the increasing the soil fertility. Now we will continue the topic cleansing the environment. The point is many microorganisms decompose the dead organic waste of plants and animals into simpler and harmless substances, such as simpler substances get into the substance get into the soil and used by other plants. Next point, anaerobic bacteria degrade the animal dung into biogas and left over slurry can be used as a manure. Now next come to the next topic, that it is harmful microorganism. जो पहले हम लोगों ने पढ़ा वो यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म था ना, अब हम लोग जो टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट इट इज़ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर अस, फॉर एन एनिमल, फॉर द प्लांट्स. नाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग, प्लांट एंड एनिमल. सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में cause disease in humans, plants and animals, spoil food, clothing and leather. ये फूड को भी स्पॉइल करता है, सड़ाता है, पॉइजनिंग बनाता है, पॉइजन टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है, क्लॉथ को भी डिग्रेड करता है, लेदर को भी डिग्रेड करता है. दिस ऑल इज डिग्रेडेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन. सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में. The first point is microbes present in air, water, and food that cause diseases in other living organisms, including humans, are called pathogens. वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हवा में, पानी में, भोजन पे सर्वाइव करता है अपने लाइफ को, जो ह्यूमन को ग्रसित करता है अलग अलग तरह के बीमारियों से, उसे हम लोग कहते हैं पैथोजेंस. Communicable disease, as we have studied this topic in the previous classes also, the disease which is transferred from infected person to healthy person is known as communicable disease. Now as I have mentioned here, microbial disease are called communicable diseases when the disease causing microbes are transmitted from an infected person to a healthy person through air, water, food, touch, or through insect bite. ये typing mistake है, insect bite. Next point, the insect that carry the disease causing microbes are called carriers of disease. Some communicable diseases are common cold, chicken pox, tuberculosis, etc. ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं communicable diseases का, which is transmitted easily from a sick person to healthy person. Now I'll make you understand by giving some examples of the communicable diseases that should be transmitted from sick person to healthy person. The question arises here, how does the infection travel through air? कैसे air से travel करेगा? When a person suffering from cold sneezes, he release fine droplets of mucus and water into the surrounding air. When a healthy person inhales this infected air, the disease causing microbes into the body. This way the healthy person also suffering from the diseases. कहने का मतलब है, जब इंसान छींकता है, खांसता है, तो उसके नाक से छोटे छोटे म्यूकस, वाटर के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं. इट विल बी इन्फेक्टेड और इन्फेक्ट द एयर. अगर वही हवा कोई हेल्दी पर्सन लेता है, इट माइट दैट पर्सन शुड बी अफेक्टेड फ्रॉम द डिजीज. नाउ सेकेंड पॉइंट, सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है. व्हेन अ हाउस फ्लाई sit on animal excreta, garbage or vomit, it may carry the pathogens which stick to the legs and wings. ये पैर के थ्रू, विंग्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है. द सेम फ्लाई व्हेन सीट ऑन अनकवर्ड फूड कंटामिनेट्स इट, उसको कंटामिनेट करेगा, उसको है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करने में हेल्प करेगा. Now next point is disease causing microorganisms in animal. Before it इसका जो मैंने दो एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं communicable disease, as like the example of malaria, dengue, एक्सेट्रास. मलेरिया जैसे मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है इसके ट्रांसमिशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं मॉस्किटो एनाफिलिस फीमेल, विच इज़
carrying the disease malaria. This is a kind of a fever, which should be transmitted from one sick person to healthy person through the sucking of the blood or transfusion of the blood. Now, next is disease causing microorganisms in animal also suffering from diseases which may be parasitic, infectious or non-infectious. Some diseases of animals are foot and mouth disease, anthrax and rinderpest, etc. These are the diseases that is of an animal. नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट. पहले हम लोग ह्यूमन बींग का पढ़े, हम लोग फिर एनिमल का पढ़े, अब प्लांट का है ना. मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीजेज इन प्लांट सच एज wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, etc. Now a few of them are citrus cancer. ये कुछ ऐसे डिजीजेस के नाम है जो मैंने मेंशन किया है. citrus cancer, apple scab, rust of wheat, etc. Now this is the last topic of this class, disease causing microorganisms in plant. In the next class I will start the food poisoning. So please don't forget to subscribe the channel and like it. Have a nice day everyone. That's all.